हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। आज की क्लास की मेन जो टारगेट है वो मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड मेजर रेसिस्टेंस। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द मेजर रेसिस्टेंस। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। आज की क्लास की मेन जो टारगेट है मॉडर्न हिस्ट्री। समझ में आया क्या बोलूं मैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द मेजर रेसिस्टेंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द क्या रिविजन फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स एंड टाइप ऑफ द पीआईक्यू। सो चलो स्टार्ट करते, पहले पीआईक्यू देखते। 1 मिनट, थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश, ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द मेजर रेसिस्टेंस। क्या क्या मेजर मेजर रेसिस्टेंस पाया है ब्रिटिश ने, उसके बारे में बोल रही है। ओके, और एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट करने बोल रहे हैं? मेजर रेसिस्टेंस ब्रिटिश रूल्स। तो विद रेफरेंस टू द प्रिक्लूड ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जो है ना, वही एक्चुअली मेन मेन थिंग्स है जो हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि बैटल ऑफ द प्लासी में ब्रिटिश के साथ साथ बंगाल की जो बंगाल के विलियम फोर्ट जो है ना, वो बंगाल के नवाब जो है, इस नवाब के साथ साथ हुआ था। और विलियम फोर्ट को टोटली एक्वायर कर लिया था। विलियम को जब एक्वायर कर लिया ना विलियम फोर्ट को, तो तब स्टार्ट हो गया बैटल ऑफ द प्लासी। डन। सो consider the following statements। क्या बोल रहे हैं? देयर was rampant misuse of trade, okay, rampant misuse of trade privileges by the officials of the company. By the officials of the company, there was rampant misuse of trade by the officials of company. Okay, trade privilege को rampant किया है, misuse किया है। trade privilege को rampant किया है and the misuse किया है। तो उसके बाद only fortified कोलकाता without the Nawab permissions। इंग्लिश fortified किया है कोलकाता को without नवाब की permissions। Then the company gave asylum to the political fugitive, okay, and the Krishnadas, son of the Raja Vallabh, who had the field with immense treasures against the Nawab's, ओके, अगेंस्ट द नवाब विल के अगेंस्ट में एक इमेंस ट्रेसियस दिया है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कौन से स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट है, तो हमको बोलना चाहिए कौन से स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट है। डन। तो फिर से देखो, बैटल ऑफ द प्लासी के बारे में बोल रहे हैं, और बैटल ऑफ द प्लासी कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर वाज ए रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज से रैम्पेंट मिसयूज হয়েছে by official of the company, by the official of the company। and English ने कोलकाता को fortified किया है without the Nawab permissions, and the company gave asylum to political fugitives Krishnadas, son of the Rajballabh, who had fled with immense treasure against the Nawab will। Which of the above statement is correct? कौन से above statement है जो correct है? Only one, only two, only three, or none? Okay, then with the reference to the Farukshire Farmans, which were regarded as the Magna Carta, okay, which was regarded as the Magna Carta of the company, and consider the following statement। तो क्या बोल रहे हैं? with reference to the Farukshire Farmans, फारूकशायर की जो फार्मन्स था, उस फारूकशायर की फार्मन्स was regarded as the Magna Carta of the company, कंपनी के मैग्ना कार्टा के बारे में बोल रहे हैं। and consider the following statement। the Bengal and the company's import and export, कंपनी के जो import होगा export होगा, were exempted from the additional custom duties। custom duties से क्या होगा? exempted होगा। okay, in Bengal the companies imported and the exported were exempted from the additional custom duties।
The company was permitted to issue dastaks for the transportation of such goods. समझ रहे हो क्या बोला? The Bengal, the company's imports and exports, कंपनी की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, वो exempted from the additional custom duties. Additional custom duties से exempted हुआ है. The company was permitted to issue dastaks. कंपनी परमिट किया है एक इशू करने के लिए, दस्तक इशू करने के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स, इस गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दस्तक इशू हुए. Who is of the statements given is incorrect. Statements is given is the incorrect. कौन सा statement incorrect है? Done. Okay. Then क्या बोला है? Consider the following statements regarding the dual government in Bengal. Bengal की dual government के बारे में बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? Both the Diwani, that is collecting revenue, and the Nizamat, that is the police and the judicial functions, come under the control of the company. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Both the Diwani, that is the collecting revenue, and the Nizamat, collecting revenue and the Nizamat, and that is the police and the judicial functions, police and judicial functions come under the control of the company. कंपनी के कंट्रोल में आया है. कंपनी एक्सरसाइज्ड द दीवानी, कंपनी एक्सरसाइज किया है दीवानी को एंड द निजामत राइट डायरेक्टली. ओके, कंपनी एक्सरसाइज्ड द दीवानी एंड द निजामत राइट directly. The dual systems lead to an administrative success and proved the advantage for the people of the Bangla. Okay, prove the advantages of the people of the Bangla. तो क्या बोल रहे हैं पर? Consider the following statement regarding the dual government of Bengal. तो क्या बोल रहे? Both the Diwani and the collecting revenue and the Nizamat and police and the judicial functions come under the control of the company. कंपनी के कंट्रोल में आएगा एंड द कंपनी एक्सरसाइज द दीवानी एंड निजामत राइट डायरेक्टली. दीवानी निजामत की जो राइट है वो डायरेक्टली कंपनी एक्सरसाइज करेगा एंड द डुअल सिस्टम लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस होगा एंड प्रूव होगा द एडवांटेज फॉर द पीपल ऑफ द बांग्ला. एडवांटेज फॉर द पीपल ऑफ द बांग्ला, फॉर द पीपल ऑफ द बांग्ला. How many statements are correct, incorrect here? कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर इनकरेक्टेड है, उसके बारे में बोल रहे हैं. देन हम बोलते हैं द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज द बैटल ऑफ द बॉक्सर, बैटल ऑफ द प्लासी, द बैटल ऑफ द वार्डिस. बैटल ऑफ द वार्डिस इसके बारे में बोल रहे हैं. तो बैटल ऑफ द बॉक्सर होगा ना, बैटल ऑफ द प्लासी होगा ना, बैटल ऑफ द वार्डिस होगा. एंड द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत. डन. तो क्या बोले? मोस्ट द डिसिसिव बैटल दैट लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. कौन से में हुआ? बैटल ऑफ द बॉक्सर में ही हुआ था एक्चुअली. ओके. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. हाँ, रिंग फेंस की जो पॉलिसी था adopted by the British rules towards the Indian state is incorrect. The company tried to form a buffer state. हाँ, buffer state create करने चाहते थे with the aim of protecting its state from the अफगान से स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड द मराठा से स्टेट को प्रोटेक्ट करने. एडॉप्टेड बाय द वॉरेन हास्टिंग्स. वॉरेन हास्टिंग्स ने यहाँ पर एडॉप्ट किया था. स्टेट वर एश्योर्ड द मिलिटरी असिस्टेंट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशंस. ओके, द स्टेट्स वर एश्योर्ड दिया है मिलिटरी असिस्टेंट को अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशंस. ऑथोरिटी ऑफ द प्रिंसेस के जो ऑथोरिटी ओवर द टेरिटरी वाज नॉट एक्सेप्टेड as their right but as a gift from the paramount powers. तो क्या बोल रहे हैं पर? द which of the following statements regarding the policy of the ring fence adopted by the British rules towards the Indian state is incorrect. The company tried to form a buffer state. कंपनी buffer state create करना चाहते थे. Okay, कंपनी buffer state create करना चाहते with the aim of protecting its state from the Afghans and the Maratha. अफगान और मराठा से प्रोटेक्ट करने के लिए ओके बफर स्टेट्स क्रिएट करना चाहते थे एंड एडॉप्टेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स. कौन एडॉप्ट किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने एडॉप्ट किया था. द स्टेट्स वर एश्योर्ड मिलिटरी असिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन. जो स्टेट्स वर एश्योर्ड कर रहा था मिलिटरी असिस्टेंस को एग्रेशन. अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसेस की जो अथॉरिटी था ओवर द territory was not accepted. Okay,
The authority of the princess की जो authority था over their territory were not accepted as their right but as a gift from the paramount power. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? The authority of princess की जो authority था over their territories के ऊपर was not accepted as their right but as a gift from the paramount power. यहाँ पर क्या बोला? Why did the armies of the British East India Company? Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising the Indian soldiers, win consistently against the most numerous and better equipped arms of the then Indian rulers? Given the reason, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Why did the armies of the British East India Company, British East India Company की आर्मी जो है ना, वो mostly comparing the Indian soldiers को comparison कर रहे हैं and win the consistently against the more numerous and the better equipped armies of the rulers. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Establishment of the British rule and the major resistance के बारे में क्या बोले? What is the background of establishment of the British rule? British rules का क्या background है? Establishment of the British rule and the major resistance क्या है? Okay, major resistance क्या है? उसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर. तो पहली बात तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं. पहले याद करना पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, कौन कौन से पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे वो पहले याद करो. याद करने के बाद देन ओके, याद करने के बाद ही हम देन देखेंगे शॉर्ट नोट से कि क्या क्या हम पढ़ेंगे. ओके, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द मेजर रेसिस्टेंस, दैट्स मीन मेजर रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिशमेंट होगा और क्या क्या रेसिस्टेंस यहाँ पर होगा उसके बारे में बोल रहे हैं. Okay, then why did the Britishers succeeded to establish rule in India? Why did the Britishers क्यों success हुआ है to establish rule in India? समझ रहे हो? Why did the Britishers succeeded to establish rule in India? इंडिया में रूल को establish करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्यों सक्सेस हुआ है इसके बारे में बोल रहे हैं. Why did, समझो. पहली बात तो ए ब्रिटिश रूल हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं लेकिन उसके लिए क्या क्या रेसिस्टेंस प्रोवाइड होना चाहिए वो बोल रहा है. देन बोल रहा है व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स सक्सीडेड टू एस्टेब्लिश रूल इन इंडिया. रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या सक्सेस होना चाहिए. देन व्हाई डिड ब्रिटिशर्स सक्सीडेड टू एस्टेब्लिश रूल इन इंडिया. ओके, फिर से सेम पॉइंट, क्यों इंडिया में रूल करने में सक्सेस हुआ है एंड एस्टेब्लिश रूल इन इंडिया उसके बारे में बोल रहे हैं. देन क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज क्या है जिसके बाय हुईज ब्रिटिश विन. ओके, बाय हुईज ब्रिटिश विन. ब्रिटिश पॉलिसीज क्या है बाय हुईज इंडियन प्रिंसली स्टेट के लिए. ओके, देन द ब्रिटिश पॉलिसीज टू द सबड्यूस्ड इंडियन प्रिंसली स्टेट के लिए बोल रहे हैं. ब्रिटिश पॉलिसीज टू सबड्यूड इंडियन प्रिंसली स्टेट के लिए बोल रहे हैं. ओके, देन कॉन्क्वेर ऑफ द बंगाल को कॉन्क्वेर किया. देन उसके बाद बैटल ऑफ द प्लासी हुआ एंड कॉन्क्वेर ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी. ओके, कॉन्क्वेर द बैटल ऑफ द प्लासी एंड द मीर जाफर्स, द मीर क्वासिम एंड द बैटल ऑफ द बॉक्सर. बैटल ऑफ द बॉक्सर के बारे में देखेंगे. देन हम देखेंगे डुअल सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल की डुअल सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे. तो पहली बात तो ब्रिटिश जो इंडिया में एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ब्रिटिश जो इंडिया में एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उस एम्पायर में ओके व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स सक्सीड टू एस्टेब्लिश रूल्स इन इंडिया. ओके, तो क्यों इंडिया में ब्रिटिश रूल करने में सक्सेस हुआ था. ओके, उसके बारे में देखेंगे. देन हम कौन कौन सी मेथड यूज किया था ब्रिटिश ने जिसकी वजह से इंडियन एम्पायर को कैप्चर करना उसके लिए इजी था. एंड ब्रिटिश पॉलिसीज टू सबड्यूड इंडियन प्रिंसली स्टेट के लिए क्या क्या पॉलिसी था उसके बारे में देखेंगे. देन हम देखेंगे कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को कॉन्क्वेस्ट किया. बैटल ऑफ द प्लासी की बैटल हुआ. व्हाट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बैटल ऑफ द प्लासी. मीर जाफर्स के बारे में एंड मीर क्वासिम
एंड बैटल ऑफ द बॉक्सर हुआ, देन डुअल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ बांग्ला में। ओके, तो देखो पहली बात कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या बैकग्राउंड चाहिए और क्या क्या बैकग्राउंड हुआ है, क्या क्या बैकग्राउंड चाहिए। एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड कंपनीज। ओके, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेड, समझ रही हो, एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड कंपनीज। यूरोपियन ट्रेड कंपनीज के लिए एडवेंट के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। देन बोल रहा मुगल की डिक्लाइन हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है रीजनल पावर एंड इंटरनल रिवलरीज हुआ है नेटिव स्टेट के बीच में, एंड द इंटरनल रिवलरीज among these European companies and success of the British East India Company and British colonial historians mention यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इज एन एक्सीडेंट एंड नोट प्लान। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लैंड। यहाँ पर रामसे मुइरी एंड द जे एस सेली। ओके डन। तो क्या बोल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल्स एंड मेजर रेसिस्टेंस। ब्रिटिश रूल के एस्टेब्लिशमेंट की बात बोल रहे हैं, और ब्रिटिश रूल के एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या मेजर रेसिस्टेंस हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं। पहली बात तो ये, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए क्या क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ है, उसके बारे में बोल रहे हैं। ओके, क्या क्या बैकग्राउंड था, तो बैकग्राउंड जो था, बैकग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश रूल, एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड कंपनी यूरोपियन ट्रेड कंपनी को एस्टेब्लिश करना एक मेन रीजन था। ओके, यूरोपियन ट्रेड कंपनी को एस्टेब्लिश करना एक मेजर रीजन था, उसके बारे में बोल रहे हैं। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल की डिक्लाइन हो रहा है, इसके बारे में बोल रहे हैं। मुगल की डिक्लाइन हो रहा है, इसके बारे में बोल रहे हैं। ओके, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल पावर को एस्टेब्लिश करना, रीजनल पावर जो है ना उस रीजनल पावर को एस्टेब्लिश करना, और रीजनल पावर जब एस्टेब्लिश होगा देन इंटरनल रिवलरीज अमंग द नेटिव इन स्टेट। इंटरनल रिवलरीज होते हैं, मुगल डिक्लाइन होते हैं। ओके, एडवेंट यूरोपियन ट्रेड कंपनी आती है, देन डिक्लेयर होते मुगल, देन एस्टेब्लिश रीजनल पावर, इंटरनल रिवलरीज हो रहा है अमंग द नेटिव स्टेट एंड इंटरनल रिवलरी अमंग द यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज के बीच में भी इंटरनल रिवलरीज हुआ है, नेटिव स्टेट के बीच में इंटरनल रिवलरीज हुआ है, एंड द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस हुआ है, देन ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन मेंशन हुआ है, ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस मेंशन ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इज एन एक्सीडेंट नॉट ए प्लान। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो है ना वो एक एक्सीडेंट है, कोई प्लान नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि रामसर मुइर इन हिज बुक में हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, रामसाई मुइर इन हिज बुक में हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द जे आर सेली इन हिज बुक में बोल रहे हैं द एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक्सपेंशन के बारे में बोल रहे हैं। देन हम देखेंगे व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स सक्सीडेड टू एस्टैब्लिश रूल्स इन इंडिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेवी था। यही से क्वेश्चन आया था, स्ट्रॉन्ग नेवी, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड द मॉडर्न वेपन्स। ओके, स्ट्रॉन्ग नेवी, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड मॉडर्न वेपन्स। देन डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज था, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी इज फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। हाँ, उसके बारे में डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर था। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन से सपोर्ट भी था। वीकनेस ऑफ द इंडियन रूलर की वीकनेस भी था। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स सक्सीड टू एस्टैब्लिश रूल्स इन इंडिया, इंडिया में रूल एस्टैब्लिश करने के लिए सक्सीड हुआ था क्योंकि ये इसकी स्ट्रॉन्ग नेवी था, स्ट्रॉन्ग नेवी, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड मॉडर्न वेपन, more crucial reason to succeed in India. Okay, strong navy, strong army and modern weapon, and then डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी भी था। उसके लिए 3 स्ट्रेटेजी यूज किया था, एक वार और एक ओके वार था और एलियंस था, एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स था। देन हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस, उसके खुद की डिसीजन लेने में फ्री था। ओके, खुद की डिसीजन लेने में फ्री था। ओके, own decisions, and that is the decentralization
सेशंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर, और डिसीजन मेकिंग पावर में डिसेंट्रलाइज था। और हाँ, कोई भी सेंटर दैट्स ब्रिटिश से ही डिसीजन आ रहा है ऐसा कोई भी बात नहीं था, और इसीलिए डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर हुआ है। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पावर्स, और ब्रिटिश पावर से भी सपोर्ट प्रोवाइडेड था। वीकनेस ऑफ इंडियन रूल्स के साथ वीकनेस आया है, वीकनेस हुआ है। ओके, इंडियन रूलर्स भी वीक हुआ है। देन हम देखेंगे व्हाई, क्योंकि इफेक्टिव डिप्लोमेसी, इसकी जो डिप्लोमेसी था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, एंड एलियन एलियंस विद इंडियन रूलर्स के साथ एलियंस क्रिएट हुआ था, तो इफेक्टिव डिप्लोमेसी भी था एंड एलियंस भी था विद द इंडियन रूलर्स के साथ एलियंस भी था। सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था यहाँ पर, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश प्रोसेस एडवांस्ड वेपन एंड द स्ट्रेटेजीज। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सुपीरियर टेक्नोलॉजी में क्या बोलता है, ब्रिटिश पोसेट एडवांस्ड वेपन एंड द स्ट्रेटेजी भी था, एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी था। सुपीरियर टेक्नोलॉजी भाई बहुत अच्छा था, और आर्मी भी ऑर्गेनाइज था। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्स, जो रिसोर्स था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग था। एंड द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रीट सी की जो कंट्रोल, इसके बारे में बोल रहे हैं, कंट्रोल ऑफ द सी एंड द यूनिफाइडेड commanders and the permanent army, external support, excellent leadership, lack of unity, weakness of the military इंडियन रूल्स याद रखना क्या क्या रीजन मैंने बोल रहा हूँ। वाई, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव डिप्लोमेसी था, एलियंस विद द इंडियन रूलर्स के साथ इफेक्टिव डिप्लोमेसी था, एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी की दिख में भी सुपीरियर था, एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी था, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्स। ओके, क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्स, कंट्रोल ऑफ द सी में भी कंट्रोल था, कमांडर जो था वो यूनिफाइडेड था, पैरा परमानेंट आर्मी भी था, आर्मी जो था परमानेंट था, एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड एक्सलेंट लीडरशिप्स, लैक ऑफ यूनिटी, इंडिया में लैक ऑफ यूनिटी था, एंड वीकनेस ऑफ द मिलिट्री इन इंडियन रूलर्स में वीकनेस था। तो क्या बोल रहे हैं पर, व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स सक्सीडेड टू एस्टैब्लिश रूल्स इन इंडिया, इंडिया में रूल एस्टेब्लिश करने के लिए क्यों ब्रिटिशर्स ने सक्सेस हासिल किया है, क्यों ब्रिटिशर्स ने सक्सेस हासिल की, इसके मेन रीजन अगर तुम देखने चाहते हो तो वो क्या होगा, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी जो होता है वो उसका जो डिप्लोमेसी था वो बहुत इफेक्टिव था। ओके, और इंडियन रूलर्स के साथ एलियंस एलियंस भी मेंटेन रखा था, इंडियन रूलर्स के साथ एलियंस भी मेंटेन रखा था। और एक बात क्या था, इसका जो टेक्नोलॉजी था ना वो बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी था दैट्स मीन, समझ लो, मॉडर्न ओपन यूज कर रहा था, मॉडर्न स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था, जब कभी अभी तक इंडिया में कोई भी नहीं यूज किया है ऐसे। आप ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की जब बात बोल रहे हैं, द ब्रिटिश आर्मी विद इट्स ब्रिटिश आर्मी जो था वेल ट्रेन था, बहुत अच्छे से ट्रेन था, और ब्रिटिश आर्मी जो था वो ऑर्गेनाइज था, कौन से एरिया में रखना था, कौन से एरिया नहीं रखना है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी था, एंड डिसिप्लिन भी था। तो क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, द ब्रिटिश आर्मी विथ इट्स वेल ट्रेन्ड, ब्रिटिश आर्मी जो है वो वेल ट्रेन्ड भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है, एंड डिसिप्लिन फोर्स है। डन। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या बोल रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यूटिलाइज्ड the British East India Company utilized their substantial financial resource। तो केवल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्स में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूटिलाइज किया है देयर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्स को, किया है देयर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्स के टू हियर लार्ज आर्मी को हेयर करना पड़े तो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है बहुत। डन। और उसके बाद क्या है, हियर द आर्मीज एंड द ब्राइब लोकल अथॉरिटी। Okay, bribes the local authorities and kings as seen in the Battle of the Plassey. As seen in the Battle of the Plassey. As seen in the Battle of the Plassey. Plassey में battle के बारे में बोल रहे हैं, समझ रहे हो? The British East India Company utilized their substantial financial
सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे एंड देन टू हेयर लार्ज आर्मी को हेयर करने के लिए एंड ब्राइब लोकल अथॉरिटीज एंड किंग्स, लोकल अथॉरिटी एंड किंग्स को ब्राइब देंगे एज सीन एंड सीन द बैटल ऑफ द प्लासी यहाँ पर हुआ है। देन कंट्रोल ऑफ द सी के कंट्रोल के बारे में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर द सी के ऊपर उसके कंट्रोल था to allow them the efficient transport troops and supply to India, efficient transport troops and supply to India, India में supply होगा and provide a significant advantage over the Indian king and provide a significant advantage of the Indian king. Done. तो क्या बोले कंट्रोल ऑफ द सी में क्या बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया द सी को अलाउ किया देम टू efficient transport troops and supply to India, providing a significant advantage over the Indian king. Provide a significant advantage to the king. Then हम देखेंगे यूनिफाइड कमांड, स्टेनो कमांड यूनिफाइड था एंड सेंट्रलाइज्ड भी था एंड ऑर्गेनाइज्ड कमांड था देयर आर्मीज और आर्मीज की ऑर्गेनाइज्ड कमांड था। ओके देन हम देखेंगे परमानेंट आर्मी। British had a permanent armies unlike Indian rural army that worked on farmland during the peacetime. Okay, worked on the farmland during the peacetime. Then external support में crown and the parliament backed the war efforts of the East India Company. Crown और parliament backed the war efforts of the East India Company. East India Company को war efforts में backed किया है. And the excellent leadership में बोला the British Army was led by exceptional generals such as the Robert Clive and Iris Court. The British Army was led by the exceptional generals such as the Robert Clive and the Iris Court. Lack of unity में बोलते Indian powers were experiencing a lack of unity. Indian power experiencing a lack of unity. Done. Or then weakness of the military of Indian rules. The military modernized program initiated by feudal Indian state where characterized by weakness. Done. तो क्या क्या effective diplomacy था aliens on the Indian state. Okay, छोड़ दो. Establishment of British expansion through three policies. Three policy use करके British expansion की है. एक war, doctrine of lapse and the misgovernment. War, doctrine of lapse and the misgovernment. Done. British policy to the subdued Indian princely state. Policy of ring of fence. Policy of the ring of fence and policy of the subordinate isolations. पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी बोल रहे हैं पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के बारे में बोल रहे हैं एम टू क्रिएट बफर जोन एंड रिंग ऑफ फेंस की जो मेन जो मोटिव थी उसका एम थी कि क्रिएट करो बफर जोन को एंड डिफेंड करो द कंपनीज फ्रंटियर्स को क्रिएट करो बफर जोन को टू डिफेंड द कंपनीज कंपनी फ्रंटियर को डिफेंड करने के लिए ओके देन द मेन threat come from the Maratha and Afghan invade. Maratha और Afghan invade से main threat आने की possibility थी तो main threat come from the Marathas and Afghan invaders. Okay, Marathas और Afghan invaders के बीच में main threat होने की बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं. Subsidiary alliance policy was an extension of the ring of fence policy. हाँ इसके बारे में रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी जो था उस रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी की एक्सटेंशन रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी जो था उस रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी की एक्सटेंशन के बारे में ही जो बात था ना उसके लिए सब्सिडियरी अलायंस आया था ओके पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी था क्या था theory of the power of paramountcy begin to emerge. Theory of the paramountcy began to emerge. Okay.
subordinate isolation. That means the state relinquished all forms of external sovereignty while retaining internal administration sovereignty. It adopt it adopted the practice of requiring prior approval and sanction of all succession matter. Okay, okay. क्या बोल रहे हैं? Theory of the paramountcy began to emerge. The state relinquished all form of external sovereignty while retaining internal administration sovereignty. Retaining internal administration sovereignty. Okay, समझ रहे हो? Then हम देखेंगे British policy to subdue Indian princely state. That's mean policy of the subordinate union. British paramount para British British paramountcy become reality. Okay, become reality. The policy of annexations was abandoned due to the state's loyalty during the 1857 revolt and their potential use as breakwaters in future potential storms. Their potential use their potential use as the breakwater in future political storms. The government of India had the complete and undisputed control over international affairs. Undisputed control over international. Distract হয়ে গেলাম. Sorry. The government of India had the complete and undisputed control over the international affairs with the authority of to declare war, peace, and the neutrality of state. And the neutrality of the state. And the neutrality of the state. चलो देखो. So the British policy to subdue Indian princely state. The policy of the policy of the subordinate union 1857 and 18 and the 1935 the British paramountcy become the reality. Okay, British paramountcy become reality. The policy of the annexations was abandoned due to the state loyalty during the 1857 revolt. Okay, and their potential use as breakwater in future political storms. The government of India had complete and undisputed control over the international affairs with the authority to declare war, peace, and neutrality for the state. For policy of equal federations. ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि द एक्ट ऑफ द 1935 में बोल रहा था scheme of formation of all India federation with the nominated members for princely state in the Federal Assembly and the Council of States. Okay, Council of State, but failed to get the implemented. अब देखो नेक्स्ट देखो बंगाल को ब्रिटिश ने कैसे जीता, ये समझो बंगाल को ब्रिटिश ने कैसे जीता. एक्चुअली क्या बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड की बेसिस में ब्रिटिश को ऐसा फील हुआ कि आप हम बांग्ला को जीत सकते हैं. क्या हुआ, नवाब सिराज था उस टाइम में, सक्सेशन था वाज चैलेंज्ड बाय टू अदर कॉन्टेंडर्स ऑफ थ्रोन. कौन कौन था, एक द शौकत था एंड द घासीटा बेगम था. ओके, शौकत एंड द घासीटा बेगम, ये दोनों के बीच में कौन लेगा नवाब सिराज की सक्सेशन होगा, इसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट होगा. इसलिए एंटी सिराज क्रिटिक स्टार्ट हो गया.
सीरियस के लिए एंटी सीरियस क्रिटिक स्टार्ट हो गया। एंड नवाब्स कोर्ट comprising Jaghat and Amir Chand and Mir Jafar's Jamindars and others who were also opposed to Sirius, जो सीरियस को अपोज कर रहा था। This seriously established the administration of Bangla and advantage was taken by English East India Company. Okay, this is the seriously established the administration of Bangla and advantage was taken by English East India Company. Main reason क्या था इस conflict की between the नवाब of Bangla and the English. नवाब of Bangla English के बेस में main reason था। ओके, देन कंपनी के दिक में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फार्मर ऑफ 1717 की जो फार्मन था ना, उस फार्मन में दिस फार्मन बिकम ए परपेचुअल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बांग्ला नवाब एंड द इंग्लिश कंपनी। बांग्ला नवाब और इंग्लिश कंपनीर মধ্যে ফার্মান 77 is the main reason for create the conflict. It meant loss of revenue. It meant the loss of revenue to Bangla government, and second dastak were missed by the company's servants to evade taxes and their private trade. तो क्या बोला यहाँ पर, फार्मर ऑफ द 1717 is the main reason or main issue, main source of conflict between the बांग्ला नवाब्स के बीच में and English companies के बीच में, बांग्ला नवाब के बीच में इंग्लिश कंपनीज में। इट मीन लॉस ऑफ रेवेन्यू जब लॉस हुआ था ना बांग्ला गवर्नमेंट की, जब बांग्ला जो गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट रेवेन्यू जो लॉस हुआ था, एंड द सेकंड दस्तक वर मिसयूज्ड बाय द कंपनी सर्वेंट। ओके, एंड द second dastak were misused by the company servant to evade taxes on their private state. Okay, दस्तक के बारे में बोल रहा था। एंड देन शेल्टर टू कृष्णदास ने शेल्टर दिया था, सपोर्ट किया था हसीटी बेगम को, एंड इमीडिएट कॉज किया था। तो एक्चुअली शेल्टर ऑफ कृष्णदास को शेल्टर दिया। द इंग्लिश कंपनी हैड गिव शेल्टर टू कृष्णदास को शेल्टर दे दिया। ट्रेटर्स हु फेल्ड with immense treasures against the Nawab's will. Okay, immense treasure against the Nawab's will. Support of the Ghasida Begum. Ghasida Begum's support में company had also offended the Nawab by giving support to claim the Ghasida Begum. Immediate cause due to the Anglo-France war, France struggles. जब Anglo और France struggles चल रहा था, began to strengthen the fortification of Fort William and the mounted guns on its wall. कंपनी में इन 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला सराउंडेड द फोर्ट विलियम। ओके, ऑन 15 जून 1757 में सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को सराउंडेड किया एंड फोर्ट फेल इन द 20 जून। द नवाब रीनेम्ड कलकत्ता एज द अलीनगर। नवाब कलकत्ता को रीनेम किया अलीनगर। ओके, प्लेस इट अंडर द चार्ज ऑफ द मानिक चंद के चार्ज किया एंड हिमसेल्फ रिटर्न टू द मुर्शिदाबाद। ओके, मुर्शिदाबाद में रिटर्न हो गया। मीनवाइल द हेल्प कम फ्रॉम द मद्रास इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। जैसे मीनवाइल हेल्प कम फ्रॉम मद्रास से जो हेल्प आ रहा था इन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स से, अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लिफ, Manikchand Nawab officers in charge of the Fort William was bribed and he surrendered after a brief pretense of resistance and Treaty of the Alinagar. तो consequently in February 1757 में the Nawabs had to make peace with English and sign of humiliating Treaty of Alinagar. Okay, the Nawab had to restore to the English their former privilege of trade and grant the permission to the fortify Calcutta and even pay the compensation for the loss of suffered by the English. समझो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर से देखो। फार्मर ऑफ द 1717 की जो फार्मन था ना, उस फार्मनिंग पे इस फार्मन का मेन रीजन हो गया था। ओके, यही जो फार्मन था, इस फार्मनिंग मेन रीजन हो गया था
कॉन्फ्लिक्ट होना बिटवीन द बंगाल नवाब के बीच में एंड इंग्लिश कंपनीज के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट होना बंगाल नवाब के बीच में इंग्लिश कंपनीज के बीच में, इट मीन लॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू टू बांग्ला गवर्नमेंट, और इसकी वजह से बांग्ला गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस्ट हो गए। एंड सेकेंड दस्तक वर मिसयूज्ड बाय द कंपनी सर्वेंट, एंड सेकेंड दस्तक जो था और मिसयूज्ड बाय द कंपनी सर्वेंट, सेकेंड दस्तक मिसयूज्ड हुआ। ओके, टू एवेट द टैक्सेस ऑन द प्राइवेट ट्रेड में बहुत ज्यादा टैक्स एवेट हुआ। एंड सेट शेल्टर टू कृष्णदास को शेल्टर दिया। इंग्लिश कंपनी हैड गिवन शेल्टर्स टू कृष्णदास, ओके, इंग्लिश कंपनी कृष्णदास को शेल्टर दिया है। ए ट्रेटर्स हु फेल्ट filled with immense treasuries against the Nawab wills. Okay. सपोर्ट टू घासीटा बेगम को सपोर्ट के लिए क्या बोला, द कंपनी हैड आल्सो ऑफेंड द नवाब, नवाब को ऑफेंड किया। कंपनी हैड आल्सो ऑफेंड द नवाब, नवाब को ऑफेंड किया बाय गिविंग द सपोर्ट टू द क्लेम ऑफ द घासीटा बेगम को सपोर्ट करने के लिए द कंपनी हैड आल्सो ऑफेंड द नवाब, नवाब को ऑफेंड किया, ऑफेंड द नवाब by giving support to claim of the Ghasida Begum immediate cause due to the Anglo-France struggle, जब Anglo-France struggle start हो गया था, the struggle and the began to strengthen the fortification of the Fort William and the mounted guns on its wall. ये बोले Anglo-France की struggle जब हो रहा था, began to strengthen the fortification of Fort William, Fort William की fortification और भी strengthen हो गया, and mounted gun on its wall, wall में mounted gun के बारे में आ रहा है। Okay, on 15 June on the 15 June 1756 की 15 जून में 1756 की 15 जून में सिराजुद्दौला ने सरेंडर किया है फोर्ट विलियम को सरेंडर किया है। एंड फोर्ट फेल इन 20 जून। नवाब रीनेम द कलकत्ता अलीनगर, नवाब कोलकाता को रीनेम किया है अलीगढ़, एंड प्लेस इट अंडर द चार्ज ऑफ द मानिकचंद के चार्ज में प्लेस किया है, under the charge of the Manikchand, and himself returned of Murshidabad. Meanwhile, help come from the Madras in form of the strong naval force. Strong naval force से मद्रास से help आ रहा था। Commandant Robert Clive and Manikchand, the Nawab officer in charge of Fort William, was bribed and he surrendered after the bribe. Oh, यहाँ पर Treaty of the अलीनगर हुआ है। Grant permission to fortify Kolkata. What is the Battle of the Plassey? Battle of the Plassey में यहाँ पर Battle of the Plassey has been 20 June 1757 में both armies meet at the Plassey. Plassey में meet हुआ बांग्ला की आर्मी और इंग्लिश की आर्मी। Only a small group of the Nawab, a small group soldiers brought the bravely, and they were led by Mir Madan ने lead किया, and the Mohanlal ने meet किया, and Nawab had to flee but was captured, put to death by the Asian and Muhammad Ali Beg. The Plassey was a transaction in which the rich bankers of the Bangla and the Mirzafars sold out the Nawabs to the English. Plassey was transactions in which rich bankers of the Bangla and Mirzafars sold out the Nawab to the English. Consequence of the Battle of Plassey, Mirzafars was proclaimed as the Nawab of Bangla, and Robert Clive was confirmed as the governor of Bangla. The company was granted undisputed right to free trade in Bangla, Bihar, Odisha. The company received jomidars of 24 Pargana near the Kolkata. Mirzapur paid out a sum of rupees 1 crore as a gift to bribe to the company's officials. Beside a large amount as personal present to Clive and compensation for company's losses, and all funds settlement in Bangla were surrendered to English. Then the Mir Jafar growing dependence on the company for military support. Dependence on company for military support was used by company to demand for finance and other privileges from the Nawab. Then Mir Jafar, in order to shed off the British yoke, and began the intriguing the Dutch against the British.
Okay, Cliff, however, this designed by the defeating the Dutch in the decisive battle of the Bedera. Okay, but now the English company had grown considerably suspicious of the Nawab and had begun to look for a suitable replacement. Mir Qasim and the son-in-law of Mir Jafar, Mir Qasim secretly promised the necessary funds if the English company agreed to support his claim to the Nawabship. The Mir Jafar was ultimately forced to abdicate in favor of his son Mir Qasim. मीर वासिम के बारे में बोल रहा है मीर वासिम जो यहाँ पर मीर वासिम rewarded his the benefactors by the granting of the company of the Jomidars of the Bardhaman, Medinapur and the Chittagong. He also promised to give the company half of the share in trade of the Ceylon. He was an able and efficient ruler and wanted to free himself from the foreign control. He shifted the capital from the मुर्शिदाबाद to the मंगूर. मुर्शिदाबाद से मंगूर में capital shifted किया है in the बिहार में and sought to modernize his army along the European line and the preparation were made for the manufacturing of guns and the Mongoor. So sought to modernize his army along the European line and the preparations were made for the manufacturing of guns at the Mongoor. The misuse of companies dastak of private trade was perpetual cause of tension between the English company and the Nawabs. Misuse of the company's dastak for private trade was perpetual cause of tension between the English company and the Nawab. After he appealed to the British, a compromise was made that the Nawab would give the English traders a share in the inland trade provided they paid 9% duty. It was also agreed that the Nawab alone would be competent to grant dastak and his authority would be ultimate in the resolution of disputes regarding trade. Unfortunately, the agreement was disapproved by the Calcutta Council and they rather favored the deposition of Mir Qasim, would provide them with yet another opportunity for receiving bribe. Out of the desperations, Mir Qasim abolished all inland duties to bring the Indian merchant on the same footing as the English, provoking hostility by an attack on Patna town. In this way, war began. The Nawab and English broke out 1763 and Nawab was defeated in a series of battles in that year. Subsequently, he fled to Awadh, formed an alliance with the Shuja-ud-Dowla and Shah Alam II and fought Mughal Empire in a final bid to overthrow the English. Then आएगा Battle of the Boxer. Battle of the Boxer immediate cause था the misuse of the dastak by the company's servant for their private trade. The three allies closed with the company's army at the Battle of the Boxer. It was a close contested battle with heavy casualties on the both sides and ended in the victories of the superior military power the British. This was one of the most decisive battles in the Indian history. It firmly established the British as masters of Bangla, Bihar, Orissa, and Agadh was the place at this march. Immediate classmate, the misuse of the dastak by the company's servant for their private trade. The three allies closed with the company's army at the Battle of the Boxer. It was a close contested battle with the heavy casualties on the both sides and ended in the victory of the superior military power of the British. This was one of the most decisive battles in the Indian history. It firmly established the British as the master of Bangla, Bihar, Orissa. Awadh was placed at this mercy. Conquest of Battle of Boxer. Boxer scaled the fate of Bangla. Nawab transferred it into the hand of the English company. Consequence of Battle of Boxer, Boxer sealed the fate of Bangla Nawab and transferred it into the hand of the English company.
Mir Jafar was brought back to the throne of Bangla, this time on mass horses in the term, hand over the district of the Medinapur and the Bardhaman and the Chittagong of the English, and permitted them duty-free trade in Bangla. Duty-free trade in Bangla, with exceptions of 2% duty on salt. He and his successor had to pay rupees 5 lakh per month to English company, allow company's intervention in the matter of the appointment and the reduce the military establishment. Settlement with Bangla, settlement of with Nawab of Bangla. After the death of the Mir Jafar, Nazim ud Dawla was allowed to succeed his father in February 1764 on the following condition. Nawab would surrender the defense and the foreign affairs. Both were Nizamat functions into the hand of the company, and civil administration in the hand of the Nawab Subedar, nominated by the company. Going by this strategy, company gained Diwani from the emperor at the Treaty of the Allahabad, and the Nizamat function from the Nawab of Bangla. And Clip was appointed as the governor and the commander-in-chief of Bangla, and the Clip's second governor. Okay. First and the foremost, he took up in the task of defending the relation with the defeated power and showed considerably practical wisdom of settlement. तो ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद में आया क्या? ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद हुआ, यहाँ पर सेटलमेंट विद द नवाब of Awadh, and the claim went to Awadh and meet the Shuja-ud-Dawla and Allahabad and signed in the first treaty of the Allahabad. Second treaty of the Allahabad and the conquest of the battle Boxer. Nawab Awadh was to pay were in indemnity of rupees 5 lakh to the company. Indemnity of the were 5 lakh to the company. Okay. Nawab was made to surrender Allahabad and the Kora to the emperor of the Shah Alam. Confirmed Balwant Singh as the Jamindar of the Banaras. The Nawab was made to enter an offensive and defensive treaty, that is the subsidiary alliance, with the company. In this way, Nawab of Awadh became the dependent on the company. Second treaty of the Allahabad, the emperor was taken into the company's protections and given the district of Kada and Allahabad ceded by Awadh, granted the company the Diwani of Bangla, Bihar and Odisha for perpetuity in return for company making an annual payment of rupees 26 lakhs Shah Alam. 2. A provision of the 53 lakh to the company in return for the Nizamat functions. And consequence of the battle of Buxar में क्या बोला? In this way, the infamous dual system was dual only in the theory, while in practical, the company acquired all real power in Bangla, and the Nawab lost all independent military and financial power, and they become a mere figure-headed. Dual system of the administration in Bangla. Thus, in practical, dual system refer to system of the company acquired all real power, while the responsibility for the administration rested on the shoulder of the Nawab. The advantage of this system was that the British had power without the responsibility. Advantage of this system was that the British had the power without responsibility. The responsibility. Okay. Thus, began of the drain of wealth from Bangla. The company stopped sending money from the England to buy Indian goods. These goods were now purchased from the revenue of Bangla and sold abroad. This drain of wealth greatly improvised Bangla and was a major factor responsible for the terrible Bangla famine of 1770. Warren Hastings abolished the dual system of government in the 1772, which was started by Robert Clive. Okay, done हो गया. अब चलो भाई नेक्स्ट हम यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देना एक एक करके. पहली बात तो ये, व्हाट इज द रीजन, सॉरी, व्हाट इज द बैकग्राउंड फॉर ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होने के लिए? पहली तो internal rivalry of Indian states, native states, Indian native states, European companies, and then
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेस होना एंड ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस भी मेंशन किया है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इज एन एक्सीडेंट नॉट द प्लान। ओके। और एक बात जो था मुगल उस टाइम में डिक्लाइन हुआ है बहुत ज़्यादा यूरोपियन एडवेंट यूरोपियन इंडिया में आया है और रीजनल पावर जो है रीजनल पावर के एस्टेब्लिशमेंट होने करा किया है मतलब व्हाई ब्रिटिश सक्सेड इन टू एस्टेब्लिश रूल्स इन इंडिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेवी था स्ट्रॉन्ग आर्मी था मॉडर्न वेपन था क्या क्या बोल रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग नेवी स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड मॉडर्न वेपन। ओके और एक जो बात था डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा यूज है और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री किया है फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। हाँ and डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर जो था डिसेंट्रलाइज था और यहाँ पर लीडरशिप जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी था और सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन से सपोर्ट भी ले रहा था वीकनेस ऑफ द इंडियन रूलर और इंडियन रूलर्स जो था वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था इस टाइम में व्हाई डिड द ब्रिटिश सक्सीड टू एस्टैब्लिश रूल्स इन इंडिया क्यों सक्सीड हुआ इसलिए तो बहुत डिप्लोमेसी जब बहुत इफेक्टिव था एलियंस विद द इंडियन रूल्स एलियंस किया एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी था मॉडर्न मॉडर्न वेपन एंड स्ट्रेटजीज भी था ऑर्गेनाइज्ड आर्मी डिसिप्लिन्ड वेल ट्रेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ब्रिटेन से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा था और यहाँ से आर्मी आर्मी के लिए बहुत सपोर्ट बहुत सारे नेटिव स्टेट से ले रहा था। ओके एंड द कंट्रोल ऑफ द सी के जो कंट्रोल था उस कंट्रोल ब्रिटिश की कंट्रोल में था ऐसे जितना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रूप्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ब्रिटिश ट्रूप्स और एनीवन तो वो बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहा था। ओके और एक जो बात था यूनिफाइड कमांड में बोला था यूनिफाइडेड कमांड में जो बोला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए यूनिफाइड सेंट्रलाइजेशन और कमांडर्स था और परमानेंट आर्मी भी था क्योंकि वर्क परमानेंट आर्मी भी था और इंडियन रूलर्स के लिए परमानेंट आर्मी नहीं था। एक्सटर्नल सपोर्ट में क्या बात था और एक्सटर्नल सपोर्ट जो था वो द क्राउन एंड द पार्लियामेंट। ओके ईस्ट इंडिया कंपनी दैट्स मीन क्राउन एंड पार्लियामेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी से एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा था और एक्सीलेंट एक्सीलेंट लीडरशिप था रॉबर्ट क्लीव आईडी कोट ये सब बहुत ओके एक्सेप्शनल जनरल द ब्रिटिश आर्मी वाज लीड बाय द एक्सेप्शनल जनरल्स हाँ बहुत ज़्यादा लीडरशिप एक्सीलेंट लीडरशिप भी था और यहाँ पर जो इंडियन पावर्स के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं था लैक ऑफ द यूनिटी इंडियन जो पावर्स था ना उस इंडियन पावर्स के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं था इसलिए बोल रहे लैक ऑफ द यूनिटी। ओके लैक ऑफ द यूनिटी देन क्या हुआ इंडियन पावर्स और एक्सपेंस लैक हो वीकनेस ऑफ द मिलिटरी ऑफ इंडियन रूल्स जो रूलर्स जो था उस इंडियन रूलर्स की जो मिलिटरी उस मिलिटरी में वीकनेस आ गया था वीकनेस ऑफ मिलिटरी ऑफ इंडियन रूलर्स द मिलिटरी मॉडर्नाइज प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द फ्यूडल इंडियन स्टेट वर कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस the military modernizations program initiated by the feudal Indian state were characterized by the weakness. Then establishment of the British rule in India में British rule की establishment जो हो रहा था और थ्री पॉलिसी यूज है war doctrine of the lapse and the misgovernment war हुआ था doctrine of the lapse हुआ था misgovernment हुआ था ब्रिटिश पॉलिसी जो subduct the इंडियन प्रिंसली स्टेट को subduct किया क्या पॉलिसी ऑफ द रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी यूज हो रहा था पॉलिसी ऑफ द रिंग ऑफ फेंस 1765 से 1813 में ये इसका एम था बफर जोन क्रिएट करना और क्या पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी था सबऑर्डिनेट आइसोलेशन करना और क्या था सबऑर्डिनेट यूनियन क्रिएट करना और इक्वल फेडरेशन क्रिएट करना। ओके तो रिंग ऑफ फेंस सबऑर्डिनेट आइसोलेशंस और पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन क्रिएट करना एंड पॉलिसी ऑफ द इक्वल फेडरेशन की पॉलिसी भी था। देन हम क्या किया बांग्ला को कॉन्केयर किया और बांग्ला कॉन्केयर करने के लिए बैकग्राउंड नवाब सिराज और कॉन्फ्लिक्ट उसके सक्सेसर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और एंटी सिराज क्लिक भी स्टार्ट हुआ था और बांग्ला जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिस्टेब्लिश्ड हो गया। ओके एंड मेन सोर्स फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब एंड बांग्ला एंड इंग्लिश नवाब एंड बंगाल एंड इंग्लिश के बारे में
बारे में मेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ था। कंपनी की बस में जो फरमान ऑफ द 1777 फरमान था, मेन रीजन था कंपनी और नवाब के बीच में एक बहुत सिचुएशन चेंज होने की। यहाँ पर क्या होता, perpetual source of the conflict between the Bangla Nawab and the English company, and it meant loss of revenue of the Bangla government, and the second dastak दे रहा था और misuse by the company servant with the tax, and the shelter कृष्णदास को शेल्टर दिया था, हसरी बेगम को शेल्टर दिया था। इमीडिएट कॉज क्या था, एंग्लो फ्रांस स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था वहां पर। स्ट्रेंथन द फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट विलियम को स्ट्रेंथन किया फोर्टिफिकेशन करने के लिए, एंड माउंटेड गार्ड ऑन इट्स वॉल में माउंटेड गार्ड था। एंड सिराजुद्दौला सराउंडेड द फोर्ट विलियम, सिराजुद्दौला ने सराउंडेड किया था फोर्ट विलियम को। नवाब ने रीनेम किया था अलीनगर, कोलकाता से अलीनगर रीनेम कर दिया। ओके, मानिकचंद हिमसेल्फ रिटर्न टू मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से चले गए। एंड ट्रीटी ऑफ द अलीनगर की ट्रीटी के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। ट्रीटी अलीनगर ट्रीटी यहाँ पर होगा। ओके, एंड इस ट्रीटी में द फेब्रुअरी नवाब हैड to make the peace with the English, sign the humiliating treaty of the Alinagar. The Nawab had to restore the English their former privilege of trade. Okay, ग्रैंड परमिशन टू फोर्टिफाई कलकत्ता, कलकत्ता को फोर्टिफाई करने के लिए ग्रैंड परमिशन दे दिया। ओके, कलकत्ता को फोर्टिफाई करने के लिए ग्रैंड परमिशन भी दे दिया। एंड इवन पे कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड बाय इंग्लिश। ओके, इवन पे कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड बाय इंग्लिश, इंग्लिश को कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा। और प्लासी जो था, प्लासी में बहुत आर्मी सब मीट हुआ प्लासी में। यहाँ पर जो मीर मदन एंड मोहनलाल की लीड में नवाब सोल्जर्स ब्रेवली लिया था। नवाब हैड फ्ली बट वाज कैप्चर्ड, फ्ली हो गया, कैप्चर हुआ, डेथ हो गया मोहम्मद अली बेग। एंड द प्लासी वाज द transition in which the rich bankers of Bangla Mir Jafar sold the Nawab of the English. मीर जाफर अब इंग्लिश हो गई, मीर जाफर बांग्ला की नवाब हो गया। रॉबर्ट क्लीव आया, confirmed as the governor of Bangla, बांग्ला के गवर्नर में रॉबर्ट क्लीव हुआ। एंड कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड, अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड। और बांग्ला बिहार उड़ीसा में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, इससे फ्री ट्रेड ले लिया। एंड कंपनी रिसीव द जमींदार्स ऑफ 24 परगना, आई मीन 24 परगना में, कोलकाता के 24 परगना में कंपनी रिसीव किया जमींदारी। एंड मिर्जापुर पेड आउट ए सम ऑफ ₹1 crore एज ए गिफ्ट। ओके, पेड किया 1 crore एज ए गिफ्ट ऑफ कंपनीज officials, and beside the large amount as personal present to Cliff and compensation for company's losses, company losses के लिए। and all French settlement in Bangla were surrounded to English, फ्रांस सेटलमेंट जो था बांग्ला में वो टोटल सराउंडेड हुआ था इंग्लिश में। and the मीर जाफर growing defense of the company अगेंस्ट ने डिफेंस स्टार्ट कर दिया फॉर मिलिटरी सपोर्ट के लिए। फॉर was used by the company to defend more finance and other privileges from the नवाब से privileges भी लिए। and Mir Jafar in order to shed off the British yoke and began the intriguing the Dutch against the British, and Clive however thwarted this design by defeating the Dutch in the decisive battle of the Badra. By now, the English company had grown considerably suspicion of the Nawab and had begun to for suitable replacement. Mir Qasim jo was son-in-law of the Mir Jafar, and Mir Qasim secretly promised the necessary fund if the English company agreed to support his claim to the Nawabship. Nawabship के लिए claim अगर support करेगा तो उस promise के fund देगा। Mir Jafar was ultimately forced to abdicate in favor of son-in-law of the Mir Qasim. ओके, द मीर कासिम की बारी आया। मीर कासिम रिवॉर्डेड हिज बेनिफैक्टरीज, मीर कासिम और जमींदारी बर्धमान की जमींदारी दे दिया, मेदिनीपुर एंड चित्तौड़गढ़ की जमींदारी भी दे दिया। he also promised to give the company half the share of trade in it. Okay, and he was an able and efficient ruler था, wanted to free himself from the foreign control से फ्री होना चाहता था, लेकिन he shift the capital, इसलिए कैपिटल को शिफ्ट किया मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मंगूर में, बिहार के मंगूर में। एंड शॉर्ट टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया along the European line में। एंड प्रिपरेशन वर मेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अब गान्स, मंगूर में गान्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। मिसयूज ऑफ कंपनीज दस्तक फॉर प्राइवेट ट्रेड के लिए कंपनीज दस्तक को मिसयूज हुआ। वाज परपेचुअल कॉज
of tension between the English company and Nawab. English company नवाब के बीच में एक tension start होना ये main reason था. After he appealed to British, compromise was made that the Nawab would give the English trades a share in the inland trade and provided they paid 9% duty. It was also agreed that Nawab alone would be competent to grant Dastak. He authority, his authority would be ultimately in the resolution of the dispute regarding the trade. Unfortunately, the agreement was disproved by the Kolkata Council, and they rather favored the deposition of Mir Qasim, would provide them and with the yet another opportunity for receiving bribe. Out of the desperations, Mir Qasim abolished all inland duty, bringing the Indian merchant on the same footing. He was actually mainly named. Then Battle of the Boxer start हो गया, and Battle of the Boxer में बहुत कुछ हो गया. मिर्जापुर, मीर कासिम और बहुत कुछ हो गया. देन ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद हुआ और भी बहुत, एंड डुअल गवर्नमेंट के बारे में भी बात बोले. एक्चुअल जो कंट्रोल था वो कंट्रोल था किसका? इंग्लिश गवर्नमेंट का था. वो आज की क्लास में नहीं कर दिया, तो मिल रहे हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में.